Good morning, students. Today we will be discussing about the significance of slip and the effect of slip on various parameters of the rotor circuit. Okay. Slip plays an important role in the induction motors. We have discussed already that slip is equal to the difference between ns minus nr divided by ns, synchronous speed. As we know that the slip speed is the difference between the synchronous and the rotor speed of the induction motor. Alright, the EMF is induced in the rotor because of the relative motion between the stator and rotor magnetic fields. We've also discussed this, alright, or due to the slip speed, which is also known as the slip speed of the motor. So therefore the EMF induced in the rotor, here the subscript 2 shows that it pertains to the rotor circuit. So E2 will be proportional to the difference between the synchronous speed and the rotor speed, which is termed as the slip speed. Alright, it is directly proportional. The rotor circuit current I2 is directly proportional to the induced EMF. Obviously, the current in the rotor circuit I2 will flow due to this induced EMF E2. So this I2 will be directly proportional to the E2, that is your induced EMF of the rotor circuit. Okay, and we know that the torque is directly proportional to the rotor current, so we can write that torque is directly proportional to rotor current, that is I2. Further I2 अभी हमने पढ़ा था, I2 is directly proportional to the EMF induced in the rotor circuit E2, and E2 was further directly proportional to E2 was further directly proportional to ns minus nr. Okay, so torque is proportional to your I2. So I2 was proportional to E2 and E2 was proportional to further ns minus nr. So we can write torque is directly proportional to ns minus nr. Okay, if we remove this proportionality, we get a proportionality constant k, suppose, into ns minus nr. Now multiplying and dividing the right hand side of the above equation by ns, what we will get? Multiplying and dividing by ns. So what is this? This is termed as the slip. This is your slip, and this k into ns can be represented by a new constant, that is k1. Okay, so we can write the torque is directly proportional to your slip, and the torque is directly proportional to slip. So what this equation shows, the above equation shows that the torque induced on the rotor is directly proportional to slip of the induction motor. जैसे जैसे आपका स्लिप चेंज करता जाएगा, वैसे वैसे आपका इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है वो भी चेंज करता जाएगा. The higher the value of the slip induced EMF in the rotor, ठीक है, जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू स्लिप की रहेगी उतना ही ज़्यादा EMF आपका इंड्यूस होगा, और उतना ज़्यादा EMF ही आपका हैवी करंट रोटर सर्किट में फ्लो करवाएगा, और उसकी वजह से आपका उतना ही हैवी जो है वो टॉर्क रोटर कंडक्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा. Alright, I hope this is clear. So now we will discuss the what is the effect of this slip on the various parameters of the rotor circuit. ठीक है, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास है सपोज द रोटर रेजिस्टेंस. The material used for the rotor winding is either copper or aluminum, mostly copper. Okay, the resistance of the rotor winding is given by the formula. We know that the resistance is given by rho L upon A, where rho is the resistivity of the material, L is the length of the material, and A is the area of cross section of the material. And we can see that it is independent of the frequency, so its value will remain constant, and it will be denoted by R2. Okay, R for resistance, 2 subscript for the rotor circuit. Now second parameter is your rotor frequency. The frequency of current and voltage
इन द स्टेटर मस्ट बी द सेम बिकॉज वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, ठीक है. एंड वी नो दैट द सिंक्रोनस स्पीड इज गिवन बाय द रिलेशन ns is equal to 120 f upon p. From here we can write f is equal to ns into p upon 120. Okay, suppose this is your equation number 1. Now the frequency in the rotor winding is variable, it is not constant, and it depends upon the difference between the synchronous speed and the rotor speed. अभी पढ़ा था हमने पीछे, ठीक है. Has the rotor frequency depends upon the slip speed, or you can say the slip. All right, the rotor frequency is given by, rotor frequency को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ये इक्वेशन लिखा था f is equal to इक्वेशन नंबर 1 में f is equal to ns into p upon 120. here f की जगह क्या आ जाएगा, एफ आर रोटर फ्रीक्वेंसी, एन एस स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, एन एस माइनस एन आर. number of poles will be same and 120 again will be same. So Fr will be equal to P times Ns minus Nr upon 120. Let this equation be equation number 2. Now divide the equation number 2 by equation number 1. What we will get, Fr upon F, जिसको अगर आप इंटरचेंज कर देंगे then you will see कि 120 से 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, P से आपका P कैंसिल आउट हो जाएगा. What you will get in the right hand side, ns minus nr upon ns. This is nothing but the slip. So fr upon f is equal to s, or we can write fr is equal to slip times the fundamental frequency. Okay, so the rotor frequency is equal to the product of per unit slip into the supply frequency. All right, so when the rotor, अब इसमें भी दो केस होंगे. एक बार तो आपका जो रोटर है वो आपका, अब इसमें भी दो केस होंगे. एक बार तो जो आपका रोटर है वो एक स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, दैट इज़ स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है. और एक बार आपका रोटर जो है वो रोटेट कर रहा है. ऑलराइट, तो रोटेट कर रहा है जब रोटर आपका, तो उस टाइम आपका रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम देखेंगे, या फिर स्टैंड स्टिल कंडीशन पे क्या है. ओके, सो व्हेन द रोटर इज एट स्टैंड स्टिल और स्टेशनरी कंडीशन, व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी दैट मीन्स the speed of the rotor is 0. Okay, so find out the slip from this formula, ns minus nr upon ns. slip का formula होता है, here the rotor speed at standstill is 0, so put 0 here, so you will find out the slip is having its maximum value 1. now what about the rotor frequency, rotor frequency का हमने अभी एक formula निकाला, ये वाला rotor frequency fr is equal to slip times the f fundamental या फिर stator frequency. सो स्लिप तो हमारा 1 है इस केस में स्टैंड स्टिल में, तो एफ आर विल बी इक्वल टू एफ. ऑलराइट, वी हैव डिराइव्ड दिस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. ओके, बट द रोटर इज ड्रिवन बाय द मैकेनिकल प्राइम मूवर एट द सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे मूव नहीं कर सकता. सो एक आइडियल कंडीशन एज्यूम किया हमने कि सपोज किसी एडिशनल मैकेनिकल प्राइम मूवर के थ्रू अगर हम इसको सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर रोटेट करते हैं, देन उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो रोटर स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी. तो स्लिप फार्मूला से क्या आ जाएगा, रोटर स्पीड की जगह पहले 0 था, अभी एन एस पुट करेंगे, देन स्लिप विल बी 0, और फ्रीक्वेंसी स्लिप टाइम्स होती है, तो स्लिप ही 0 है तो रोटर फ्रीक्वेंसी आपकी 0 हो जाएगी. ठीक है, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट varies from value fr is equal to f at standstill, जहाँ पे slip 1 है value, to fr is equal to 0 when the synchronous speed is at the synchronous speed when the slip is 0. Okay, now next जो parameter है that is your rotor inductance. The entire flux set up by the rotor conductors does not link with the stator winding. ऑलराइट, वी हैव डिस्कस दी ऑपरेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर, और उसमें हमने देखा था कि रोटर कंडक्टर्स के ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको कट करती है, उसमें एक करंट फ्लो करता है, और उस करंट की भी अपनी डेफिनेटली एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, एज शोन इन फिगर हेयर. दिस इज योर स्टेटर पोर्शन, रोटर पोर्शन. क्रॉस पोलैरिटी करंट जो है वो यहाँ इंड्यूस हुआ है, तो डेफिनेटली इसकी अपनी एक
मैग्नेटिक फील्ड होगी कंडक्टर की। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कंडक्टर के अराउंड, ये इसका कुछ पोर्शन स्टेटर के कंडक्टर से लिंक ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही लिंक करता है। ठीक है, द एंटायर फ्लक्स सेट अप बाय द रोटर कंडक्टर्स डज नॉट link with the stator winding, okay, but a part of this also links with the rotor conductor only, इसी के अराउंड रहता है। this flux is termed as which links only with the rotor conductor and not with the stator winding is termed as the leakage flux. You must have heard this term already, okay, so this is termed as your leakage flux. So what happens with this leakage flux? This leakage flux provides leakage inductance, and the leakage inductance रोटर की है because, तो इसको L2 से डेजिग्नेट करेंगे। The leakage flux and hence the inductance is very small, okay, if the rotor conductors are placed on the outermost periphery of the rotor, okay, ये जनरली लो होती है लेकिन फिर भी होती है, कंसिडर करना पड़ेगा इसको, okay. So when the rotor इंडक्टेंस है तो रोटर रिएक्टेंस भी होगा, ओके। द रोटर रिएक्टेंस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, वी नो दैट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी द रोटर रिएक्टेंस पर फेज विल ऑब्वियसली चेंज, ठीक है। सो वी कैन राइट द रोटर रिएक्टेंस x2 डैश और x2 यू कैन राइट हेयर ओनली x2 भी लिख सकते हो। वी नो दैट x किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। सो हियर ओमेगा इज ओमेगा एंड एल इज योर लीकेज इंडक्टेंस L2. सो हियर ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ डैश या एफ आर भी लिख सकते हैं इसको, बिकॉज इट इज़ योर रोटर फ्रीक्वेंसी, ओके, because it is your rotor frequency 2 pi fr into L2. So where fr was, we have already found out it is equal to the product of slip times the frequency of the stator. So 2 pi sf into L2 ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, स्लिप को हमने अलग लिख लिया, ये सारी चीज़ों को अलग लिख लिया, तो ये यहाँ x2 0 आ जाएगा, स्लिप टाइम्स दी x2 0, दैट इज रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। सो x2 विल बी इक्वल टू स्लिप टाइम्स दी x2 0, okay. So here you can write x2 is equal to slip times x2 0 और x2 dash is equal to slip times x2, just to differentiate कि x2 dash आपका रनिंग कंडीशन में है, x2 आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। You can choose any of the terminologies here, alright. So when the rotor is at standstill or at the time of start, the slip is having the unity value. So x2 हमारा 2 pi f into L2 की जगह होगा, ओमेगा into L2, alright. So this is your final equation कि अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन में रोटर रिएक्टेंस आपका x2 dash is equal to slip times the x2, that is your reactance at द स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर ये वाला एक्सप्रेशन भी आप लोग लिख सकते हो, ओके। सो दिस इज इफेक्ट दैट कि जो आपकी रिएक्टेंस है या जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू स्लिप टाइम्स चेंज हो जाएगी जब वो रनिंग कंडीशन में होगा। नेक्स्ट इज योर रोटर करंट। रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। Let E2 0 is the EMF induced per phase of the rotor when it is at standstill condition. Similarly x2 0 भी हमने अभी पढ़ लिया, रिएक्टेंस पर फेज है ऑफ द रोटर एट स्टैंडस्टिल पोजीशन, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 पाई एफ इंटू L2 के बराबर हुई, ओमेगा इंटू L2, ठीक है। Z2 0 क्या है, रोटर इम्पिडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, जहाँ पर 2 0 आपका लग गया, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में, दैट स्टैंड्स फॉर 2 स्टैंड्स फॉर द रोटर एंड 0 स्टैंड्स फॉर द स्टैंड स्टिल कंडीशन। इट रिमेंबर इट, यू विल easily recall everything, okay. Then I2 0 is rotor current per phase at standstill condition. तो अगर मुझे impedance का formula लिखना है then what will be impedance in terms of the phasors, sorry vectors,
So Z20 will be equal to R2 plus J times X20. ठीक है, और उसके बाद I20 किसके बराबर रहेगा, E20 अपॉन Z20. ठीक है, रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, सिंपल ओम्स लॉ जैसे लगता है आपका. ठीक है, E20 EMF इंड्यूस्ड एट द स्टैंड स्टिल डिवाइडेड बाय रोटर इम्पिडेंस एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन. और अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है स्टैंड स्टिल कंडीशन के ऊपर, देन व्हाट यू विल फाइंड आउट, कॉस ऑफ φ20 उसको लिख देंगे. इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ R अपॉन Z के बराबर होता है. तो इफ़ इट इज़ स्टैंड स्टिल कंडीशन, you can write 2 and 20 as subscript to it. As rotor does not change, so you can write it only R2 और R20 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है. डिवाइडेड बाय Z20 क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर अंडर रूट. ओके, होप दिस इज क्लियर. Then what will be the value of rotor current at slip S? The induced EMF per phase in the rotor winding at slip S is given by E2S, उसको लिख रहे हैं हम यहाँ पे, और भी कितने बराबर था वो, स्लिप टाइम्स दी EMF इंड्यूस्ड एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन. सिमिलरली रोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पर फेज R2 है, वो चेंज नहीं होगा बिकॉज देर इज़ नो वेरिएशन इन द फ्रिक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू रोटर रेजिस्टेंस. ओके, सो रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस अभी निकाला था हमने एट द स्लिप एस इज X2S निकाला था, विच वॉज इक्वल टू स्लिप टाइम्स दी X20 रोटर रिएक्टेंस एट द स्टैंड स्टिल. ओके, सो व्हाट विल बी रोटर करंट, सपोज I2S लिख रहा हूँ उसको, तो E2S लिख दूंगा, EMF इंड्यूस्ड बाय डिवाइडेड बाय दी इम्पिडेंस. फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ रहेगा, सबस्क्रिप्ट में, E2S डिवाइडेड बाय Z2S. नाउ E2S किसके बराबर है, स्लिप टाइम्स दी EMF इंड्यूस्ड एट दी स्टैंड स्टिल कंडीशन डिवाइडेड बाय Z2S. नाउ Z2S विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस, अब रिएक्टेंस आपका चेंज हो गया है, रिएक्टेंस आपका X20 नहीं है, किसके बराबर है, स्लिप टाइम्स दी X20. तो वहाँ पे स्लिप टाइम्स X20 चेंज हो जाएगा, होल स्क्वायर एंड अंडर रूट. सो इस तरह से किसी भी स्लिप के ऊपर आप लोग रोटर करंट को निकाल सकते हैं. ठीक है, एंड फाइनली अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है किसी भी स्लिप के ऊपर, कॉस ऑफ I2S, देन R2 अपॉन Z2S होता है, पता है हमें, देन इट विल बी इक्वल टू R2 अपॉन Z2S, R2 स्क्वायर प्लस S टाइम्स X20 होल स्क्वायर अंडर रूट. ओके, सो प्रैक्टिस these derivations and try to understand these derivations. All right.